Hello, my dear students. Welcome to the Slate class of physics. In this class, we will study the chapter of gravitational field. And the topic that we will discuss is the variation of gravitational field strength between two unidentical masses. Right? In the previous lecture, we saw the variation of gravitational field strength between two identical masses. But here, as you can see on your screen, one of the masses is Earth, the other one is Moon. You know that Earth and Moon are two unidentical masses and the value of G is different for both the planets. So we will see the variation on their surfaces and within them. So what is the formula of gravitational field strength? The formula of gravitational field strength is G equals Gm over R square. For Earth, we have its mass. The mass of Earth is 6 times 10 power 24 and its radius is approximately 6400 kilometers, right? For Moon, the mass is 7.3 times 10 power 22 kg and its radius is 1730 kilometer roughly. So let's find out gravitational field strength at surface of Earth. For Earth, G equals Gm over R square, 6.67 into 10 raised to power minus 11. Mass of Earth is 6 multiplied by 10 raised to power 24, right? Divided by radius square. Radius is 6400. आप किलोमीटर्स को कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में, आप इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे 10 raised to power 3 से, and this whole thing squared, right? Pick up your calculators and find out this value. 6.67 into 10 raised to power minus 11 multiply by 6 multiply by 10 raised to power 24 divided by 6400,000 square. This value is approximately 9.8. So G for the Earth is 9.8 newtons per kg. Let's find out the value of gravitational field strength for Moon. लेकिन Earth की gravitational field strength को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. G is 9.8 newtons per kg. Right? For Moon, the expression of gravitational field strength is same. So let's substitute the values. You will write G equals G, which is 6.67 into 10 raised to power minus 11 multiplied by mass, which is 7.3 multiplied by 10 raised to power 22 divided by 1730 multiplied by 10 raised to power 3 whole square, right? Once again, substitute the values in your calculators. 6.67 multiplied by 10 raised to power minus 11 multiplied by 7.3 multiplied by 10 raised to power 22 divided by 1730,000 square. And this value is approximately 1.62. I will write G is equal to 1.6 newtons per kg, right? अब हमें इसकी वर्किंग की जरूरत नहीं है. We have the value of the gravitational field strength of both the planets. तो मैं इस वर्किंग को इरेज कर देता हूँ, right? So we know that Earth is a larger mass. It has greater gravitational field strength. So its exact value is approximately 9.8, and for Moon, gravitational field strength is approximately 1.6 newtons per kg. So these are unidentical masses, right? Okay, as you know that gravitational field strength is a vector quantity, right? हम इसको direction assign करते हैं. If it's a vector, so all the gravitational field strengths towards right hand side will be considered with positive sign. हमने convention set कर लिए कि right side पर gravitational field strength का positive sign होगा और left side पर इसका opposite sign होगा, right? So if we place a small mass at the surface of Earth or near the surface of Earth, it will be attracted toward Earth, right? इसका मतलब ये है Earth की surface पे the direction of gravitational field strength is towards left. Object is attracted. So left पर है, इस वजह से left वाली direction में gravitational field strength का क्या sign होगा? The sign of gravitational field strength will be negative sign.
So what if we place a small mass near the surface of moon? It will be attracted towards moon, it will move towards right hand side. तो राइट हैंड साइड पर मूव करेगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स राइट हैंड साइड होगी. सो टुवर्ड्स राइट gravitational field strength has positive sign. Right? So we can further say that on the surface of Earth, gravitational field strength, अब ये relative बात हो रही है. Relative मतलब Earth की towards left है और उसके respect से Moon की towards right है. So for Earth this value is minus 9.8 and for Moon this value is plus 1.6 newtons per kg. Right? Now moving on, आप ये कह सकते हैं कि आपके पास उनके सर्फेसेस पे ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड विद द रिस्पेक्टिव डायरेक्शन आ चुका है. ठीक है. नाउ यू नो दैट अर्थ इज अ बिगर मास, इट हैज ग्रेटर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एंड मून इज अ स्मॉलर मास, इट हैज मच स्मॉलर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. हम पर ही अनआइडेंटिकल मासेस रहे. राइट. ओके. व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास. ठीक है. याद रखना, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगी तो उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी जीरो होगी, बिकॉज जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज जीरो. राइट. सो इज देयर एनी पॉइंट बिटवीन अर्थ एंड मून एट विच ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज जीरो? देखें, अर्थ किसी भी मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और मून किसी भी मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. सो देयर विल बी अ पॉइंट at which both of these attractive forces due to Earth and Moon will be cancelled out. And that point will be somewhere between Earth and Moon. तो आप बताइए, will that point be more closer to Earth or Moon? It will be more closer to Moon, right? Because Moon smaller mass है और उससे ये वाला point करीब होगा. So let's name that point X. Right? पॉइंट एक्स के अबाउट जितना ग्रेविटेशनल पुल मून का है, जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स मून की है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, उतना ही ग्रेविटेशनल पुल अर्थ का है. सो बेसिकली दीज आर टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस. राइट. यहां पर दोनों फोर्सेस कैंसल आउट हो जाएंगी एंड द नेट फोर्स विल बी जीरो. तो अगर यहां पर नेट फोर्स जीरो है तो यहां पर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड भी जीरो होगा. राइट. So this is the point at which gravitational field strength is zero. So generally this point is referred as null point or neutral point. Right? Is point पर the magnitude of gravitational field strength is zero. So we have three informations. Number one, the magnitude of gravitational field strength at surface of Earth is 9.8. On the surface of Moon it is 1.6. And number three, there is a point which is more closer to Moon. At this point, the gravitational field strength due to both of the planets is cancelling out. So the net gravitational field strength at this point is zero. So let's plot a graph of gravitational field strength from the surface of Earth to the surface of Moon. Right? This is the center of Earth. I'm calling this point C. And this point is center of Moon. This is point C. So let's start drawing the graph right from the center of Earth. ठीक है. मैं इसी डायग्राम के नीचे ग्राफ स्केच कर रहा हूं. This is y axis and this is x axis. Right? The quantity along y axis is gravitational field strength and it is measured in newtons per kg. Right? The quantity along x-axis is distance and distance is measured in meters. Right? Now this point marks the surface of Earth and this point marks the surface of Moon. This is the center of Moon. And this is null point, a point where the magnitude of gravitational field strength is zero. तो ये मैंने येलो कलर से कुछ रेफरेंस लाइंस ड्रॉ की है. राइट. याद रहे कि इनसाइड द ऑब्जेक्ट, इनसाइड द स्फीयर,
from the center to the surface, gravitational field strength increases linearly. That is not the part of our syllabus. So, अब आपके पास relative gravitational field strength आ गई है. For Earth it is -9.8. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -9.8. For Moon its magnitude is 1.6. So I will write 1.6. Now keep in mind that this graph is not to the scale, right? So this point is showing the magnitude of gravitational field strength at the surface of Earth, and this point is showing magnitude of gravitational field strength at the surface of Moon. And there's a point which we will prove it is more closer to Moon, where the gravitational field strength is exactly 0, right? Acha, according to this formula of gravitational field strength is equal to Gm over r square. G is proportional to 1 over r square. This is called inverse square law. Okay? So the variation of gravitational field strength outside the planet will be according to this formula. ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ कर रहा हूँ. मैं सिर्फ अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को ड्रॉ कर रहा हूँ, कंसिडरिंग अर्थ इज एन आइसोलेटेड मास. सो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करेगी एंड ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, राइट? नाउ लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू मून ओनली. जब मून से डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ विल रिड्यूस. सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ as we increase the distance from moon, right? और जितना मून से अवे जाते जाएंगे, gravitational field strength will reduce and reduce, right? Okay. अब अर्थ की सरफेस पे और मून की सरफेस पे आपके पास gravitational field strengths आ गई, ठीक है? तो अगर आपने नेट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है तो हर पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अर्थ और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू मून with their correct signs उनको ऐड करेंगे. For example, right at the null point you can see जितनी मून की पॉजिटिव ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है एग्जैक्टली उतनी अर्थ की नेगेटिव ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, राइट? तो दोनों का रिजल्टेंट कहां पर फॉल करेगा? दोनों का रिजल्टेंट विल फॉल राइट एट दिस पॉइंट जो हमने ड्रॉ किया, राइट? तो हर पॉइंट पर अगर आपने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है तो अर्थ की और मून की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को ऐड करते हुए आप इस ग्राफ को कंप्लीट करेंगे. सो आफ्टर एडिंग द ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस. दिस विल बी द शेप ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ विद इन द प्लैनेट्स, लाइक दिस एंड दिस. ठीक है? अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि इस पॉइंट पे सरफेस ऑफ मून पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ तो सरफेस ऑफ मून वाली आ रही है, अर्थ की क्यों इंक्लूड नहीं कर रहे? वो जो इतने लार्ज डिस्टेंस पे अर्थ की ग्रेविटी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 0. एज यू कैन सी कि ये ग्राफ यहां पर आके एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल हो रहा है, जस्ट अबाउट टच एक्स एक्सिस, ठीक है? सो मून की सरफेस पे अर्थ की ग्रेविटी का इंपैक्ट बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है और अर्थ की सरफेस पे मून की ग्रेविटी का इंपैक्ट बहुत कम होता है. सो the net gravitational field strength due to two planets is shown by this purple, right? अगर आपने inside the earth भी sketch करना है तो inside the earth will be variation like this. From the center of earth to the surface of earth, gravitational field strength increases linearly. Similarly, from the center of moon to the surface of moon, gravitational field strength once again increases linearly, right? Okay, now these yellow lines are representing gravitational field lines of individual planet. अगर आप कहते हैं कि आपने इसको ड्रॉ ही कर देना है तो ड्रॉ कर दें, अदरवाइज आप इनको इरेज भी कर सकते हैं. तो मैं इन येलो लाइंस को इरेज कर रहा हूं बिकॉज नाउ आई हैव अ ग्राफ ऑफ नेट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन द प्लैनेट्स. नाउ लेट्स प्रूव दैट द नल पॉइंट इज मोर क्लोज टू मून, राइट? Let's assume that distance between the center of Earth due to center of Moon, right? This distance is, let's assume this distance is 100 units. Center of Earth से लेके center of Moon तक जो distance है, let's assume that this total distance is 100. ठीक है? There is a null point which is closer to Moon, so let's assume that this null point is at distance
x from the center of moon. Let's call this distance x. तो आप बताइए कि अर्थ से नल पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होगा. अर्थ से नल पॉइंट का डिस्टेंस will be referred as 100 minus x. So this distance is 100 minus x. हम कह रहे हैं कि इस नल पॉइंट पे जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ टुवर्ड्स लेफ्ट है, उतना ही ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ड्यू टू मून टुवर्ड्स राइट. ठीक है, दैट्स व्हाई द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अर्थ विल बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू मून. ठीक है, जितनी अर्थ की ग्रेविटी उतनी ही मून की ग्रेविटी. We have their masses. The mass of Earth is 6 times 10 power 24 and the mass of Moon is 7.3 times 10 power 22. ठीक है? So at null point, आप दो equations लिख सकते हैं. You can write that gravitational field strength due to Earth is equal to gravitational field strength due to Moon. Right? Or you can write gravitational field strength of Earth with negative sign is equal to gravitational field strength of moon due to positive sign. तो अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे आपका सम क्या होगा? Your sum will be 0. Right? Okay. So the formula of gravitational field strength is gm over r square. Right? And this formula will be gm over r square. याद रहे कि राइट हैंड साइड पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मून है और लेफ्ट साइड पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अर्थ है और ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करें. राइट? Now gravitational constant will be cancelled out with gravitational constant. So mass of Earth is 6 times 10 power 24 divided by distance from the center of Earth. और हमने देखा कि this distance is 100 minus x. So you will write 100 minus x whole square is equal to gm. जी तो जी से कैंसिल आउट हो गया. मास ऑफ मून इज 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 22 और सेंटर ऑफ मून से इस पॉइंट का डिस्टेंस है, हमने अज्यूम किया दिस डिस्टेंस इज एक्स स्क्वायर. राइट? सो लेट्स फाइंड आउट कि मून के सेंटर से नल पॉइंट का डिस्टेंस कितना आ रहा है. राइट? सो यहां पर आप स्क्वायर ओपन करने की बजाय टू गेट रिड ऑफ दिस स्क्वायर यू विल टेक अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, आपने एग्जाम में अपने काम को, अपने मैथमेटिकल वर्क को मिनिमाइज करना है, अपने काम को इंक्रीज नहीं करना. राइट? सो टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स. और यहां पर भी कुछ कैंसिलेशन हो रही है. 10 रेज़ पावर 22 यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये रिड्यूस होकर सिर्फ रह जाएगा 10 रेज़ पावर 2. सो यू विल राइट अंडर रूट ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 2 डिवाइडेड बाय 100 minus x is equal to under root of 7.3 divided by x. Right? So let's solve this expression for x. Under root of 600 is 24.5. 24.5 divided by 100 minus x is equal to under root of 7.3 is 2.7. 2.7 divided by x. Right? Let's solve this expression for x. You will write that 24.5 x divided by 2.7 is equal to 100 minus x. Right? 24.5 divided by 2.7. This is 9.07x plus 1. 10.07x is equal to 100. So x is equal to 100 divided by 10.07, which is 9.9. 9.93. ठीक है, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10. ठीक है, अब नल पॉइंट का डिस्टेंस 10 आ रहा है. याद रहे वी हैव अज्यूम्ड दैट द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ मून इज 100. अगर ये टोटल डिस्टेंस 100 है तो ये डिस्टेंस x जो है
null point का distance from the center of moon is approximately 10. So 100 minus x will be 100 minus 10. This distance will be 90. ठीक है? So this is 90:10, which is equal to 9:1. It means that null point is a point at which the gravitational field strengths are being cancelled out. This is 9 times away from Earth and 1 times away from Moon. So it is 9:1. This point is much far away from Earth and much closer to Sun. Right? The null point is at a distance of 9 from the center of Earth and distance of 1 from the surface of Moon. ठीक है? अब आपके पास ये ग्राफ आ गया और आपके पास आ गया ये नल पॉइंट का डिस्टेंस. We yet have to draw one more graph. तो इस वर्किंग को हम साइड पे कर देते हैं so that we can do some more working at this space. So have a look. We have a variation of gravitational field strength between the points और अब हमें ये डिस्टेंस पता है कि डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 9:1. तो ये मैं एक्स्ट्रा लेंस को यहां से इरेज कर देता हूं. वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क हियर. इस रेशो को रहने देते हैं. नल पॉइंट इज एट रेशो ऑफ 9:1. राइट? ओके. अब आप मुझे ये बताइए कि इफ यू हैव अ स्मॉल ऑब्जेक्ट at the surface of Earth and you want to throw this object right at the surface of Moon, तो आप इसको certain velocity से यहां से throw करेंगे, right? And this velocity at the surface will be maximum, right? बच्चों, अगर ये ऑब्जेक्ट नल पॉइंट को ओवरकम कर जाता है, नल पॉइंट से आगे निकल जाता है, तो फिर मून इसको अपनी तरफ खुद अट्रैक्ट कर लेगा. बट इफ दिस थ्रोइंग वेलोसिटी इज लेस देन दैट वेलोसिटी कि ये नल पॉइंट तक ही ना पहुंचे, तो ये क्या होगा? ये आगे तो जाएगा लेकिन नल पॉइंट तक नहीं पहुंचेगा, तो फिर ये वापस अर्थ पर आकर हिट करेगा. सो देयर शुड बी अ मिनिमम वेलोसिटी एट विच इट शुड बी थ्रोन सो दैट इट रीचेस नल पॉइंट. उधर से आगे तो मून इसको खुद अट्रैक्ट कर लेगा. राइट? सो लेट्स अज्यूम कि हमने इसको इस वेलोसिटी पर थ्रो किया है कि ये नल पॉइंट को ओवरकम कर लेगा. राइट? सो स्टार्टिंग पॉइंट पे एट द सरफेस ऑफ अर्थ वेलोसिटी इज मैक्सिमम, व्हिच मींस काइनेटिक एनर्जी इनिशियली इज मैक्सिमम. तो अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो कौन सी एनर्जी मिनिमम होगी? एट द सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम. राइट? ओके. जब ये ऑब्जेक्ट प्रोग्रेस कर रहा है टुवर्ड्स मून, तो आप मुझे बताएंगे बिफोर नल पॉइंट व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन. देखें, ऑब्जेक्ट जाना चाह रहा है टुवर्ड्स राइट, लेकिन अर्थ इसको पुल बैक कर रही है. अर्थ इसके मोशन को रेजिस्ट कर रही है बिकॉज अर्थ उसको लेफ्ट की तरफ अट्रैक्ट बैक कर रही है. तो ये राइट साइड पर जाते हुए डिसेलरेट करेगा, इसकी स्पीड रिड्यूस होगी. राइट? तो राइट साइड पर जाते हुए इट हैज डिसेलरेशन. और कौन सी डिसेलरेशन? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? विल हैव डिक्रीजिंग डिसेलरेशन बिकॉज जब ऑब्जेक्ट अर्थ से अवे जाएगा तो इसके ऊपर नेट फोर्स विल रिड्यूस. ठीक है? सो टुवर्ड्स राइट हैंड साइड इट हैज डिक्रीजिंग deceleration. Decreasing deceleration. Right at this point it has velocity which is minimum because इसने maximum decelerate कर लिया. Right? और जब ये इस पॉइंट को क्रॉस करेगा, जब ही ये मून की रेंज में एंटर होगा, तो मून कहेगा कि आगे का रास्ता मैं इसको कवर करवा दूंगा. मून इसको खुद अट्रैक्ट कर लेगा. So after this null point it accelerates due to pulling force of moon. Right? So it will have acceleration. In fact, it will have increasing acceleration. Why increasing acceleration? जैसे जैसे मून से डिस्टेंस रिड्यूस होता जा रहा है, मून की ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जा रही है. फोर्स ज्यादा होगी तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगी बिकॉज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन F equals ma. सो नल पॉइंट तक ऑब्जेक्ट ने डिसेलरेट किया और नल पॉइंट के बाद टिल रीचिंग मून इट एक्सेलरेटेड. सो
at which point during the whole journey its velocity was minimum, right at this null point. इस पॉइंट पर इट हैज मिनिमम वेलोसिटी. वेलोसिटी इज मिनिमम बिकॉज यहां तक डिसेलरेशन हुई थी, वेलोसिटी रिड्यूस हुई थी, इससे ऑनवर्ड दोबारा एक्सेलरेशन स्टार्ट हुई थी, राइट. सो इस पर मिनिमम वेलोसिटी है, तो फिर कौन सी एनर्जी मिनिमम होगी? विच एनर्जी इज एसोसिएटेड विद वेलोसिटी? काइनेटिक एनर्जी. तो इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, और कौन सी एनर्जी फिर मैक्सिमम होगी? पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम. पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम, राइट. इसके बाद दोबारा से एक्सेलरेट होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग ऑन एक्सपेंस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि आपने इस ऑब्जेक्ट को जिस वेलोसिटी से लॉन्च किया था, मून के सरफेस पे जाते जाते क्या ये इसी वेलोसिटी से लैंड करेगा, इससे कम वेलोसिटी पर लैंड करेगा, या इससे ग्रेटर वेलोसिटी पर लैंड करेगा? बच्चों, इट विल लैंड एट वेलोसिटी लेस देन द लॉन्चिंग वेलोसिटी. रीजन, बिकॉज ये अर्थ से मून के सरफेस तक डिसेलरेट ज्यादा हुआ, डिस्टेंस भी ज्यादा था, लेकिन नल पॉइंट से लेके मून तक एक्सेलरेशन का इसको इतना चांस नहीं मिला, बिकॉज दैट डिस्टेंस वाज लेस. सो this object will land at velocity which is less than the launching velocity. Launching velocity. Right? Now, right below the graph of gravitational field strength, we will draw the variation of its gravitational potential energy. Okay? So right below this graph, I am sketching a graph of variation of gravitational potential energy. So the quantity along y-axis is gravitational potential or gravitational potential energy, and the variation along x-axis is once again distance. Right? So this is gravitational potential or gravitational potential energy, and the quantity along x-axis is once again distance in meters. These are the same referral lines. This line is representing surface of Earth. This line is representing null point. ठीक है? And this point is representing surface of moon. हमने इन्हीं point में variation को देखना है, right? So at the surface of Earth, we know that gravitational potential energy was minimum. याद रहे, the formula of gravitational potential energy is minus gmm over r, right? So at the surface of Earth, gravitational field strength is minimum, which is most negative. So point will be plotted somewhere here. Most negative. ठीक है? और आपने कहा अप टू नल पॉइंट ऑब्जेक्ट डिसेलरेट्स, इसकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो. इसका मतलब है इंक्रीज का मतलब है इट विल बिकम लेस नेगेटिव. तो नल पॉइंट पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई, और उसके बाद जब ये मून की तरफ जा रहा है तो मून की तरफ वंस अगेन इट एक्सेलरेट्स, इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी ऑन द एक्सपेंस ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी. सो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, व्हिच मीन इट विल बिकम मोर नेगेटिव, राइट? सो जितनी इंक्रीज हुई डिक्रीज उससे कम होगा, सो पॉइंट विल बी प्लॉटेड हियर, राइट? सो टू सी द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन the earth and moon, you will draw a smooth curve and that will look something like this. एक unsymmetric सा ग्राफ होगा and this will be like this, right? अच्छा, अब ऊपर वाला जो ग्राफ है, this is graph of gravitational field strength. याद रहे कि this is also showing the trend of the net force and the net acceleration. जैसा कि आपने कहा था कि अर्थ की सरफेस से लेके null point तक this object, this mass will decelerate, और deceleration का क्या साइन होता है? नेगेटिव साइन. तो आप ग्राफ से भी देख सकते हैं कि यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ नेगेटिव, और कौन सी डिसेलरेशन थी? इट इज डिक्रीजिंग डिसेलरेशन. तो आपको ग्राफ शो कर रहा है कि दिस इज डिक्रीजिंग डिसेलरेशन, राइट? ओके, राइट एट द मिड पॉइंट
इसकी डिसेलरेशन जीरो थी बिकॉज नेट फोर्स जीरो है, तो नेट एक्सेलरेशन भी जीरो होगी. और अर्थ से ऑनवर्ड इट एक्सेलरेट्स, सो यू कैन सी कि यहाँ पर साइन जो है दिस इज अ पॉजिटिव साइन एंड इट इज इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन. सो ग्राफ इज शोइंग दैट दिस इज इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, राइट. As you know that gravitational field strength is equal to force per unit mass, और आप ये भी लिख सकते हो force is equal to ma over mass, right. mass से cancel out हो जाएगा. Gravitational field strength is actually the acceleration of the object. So बच्चों ये वाला ग्राफ आपको acceleration भी तो शो कर रहा है. There is a lot of information in this one graph, in this one scenario. और यही इक्वेशन को आपको डिफरेंट मेथड से अप्लाई करेगा. इसी तरह की डायग्राम्स एग्जाम में आएंगी. आपको यही वाली वीडियो ध्यान से देख के इसके पास पेपर्स करने, राइट. ओके, अब पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट में मैक्सिमम नेगेटिव थी, इसका मतलब है मिनिमम थी. इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी दोबारा से रिड्यूस हुई. इसका मतलब ये है काइनेटिक एनर्जी की वेरिएशन का ट्रेंड इस पोटेंशियल एनर्जी के ट्रेंड से एग्जैक्टली ऑपोजिट है, राइट. अब एग्जाम में आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा. वो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि आप इस ऑब्जेक्ट को किस वेलोसिटी से थ्रो करेंगे तो ये मून की सरफेस पे पहुंचेगा. मेरे से आपसे बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि लेट्स सपोज यू हैव दिस हिल, यू हैव टू लैंड दिस बॉल एट द अदर साइड ऑफ हिल. तो आपका काम क्या है, इसको कितनी वेलोसिटी देना, ये कहां तक पहुंच जाए, ये टॉप तक पहुंच जाए, आगे ग्रेविटी इसको खुद से अट्रैक्ट कर देगी. तो इस केस में भी आपका काम यह है कि आप बॉल को इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड कर दें सो दैट इट रीचेस द नल पॉइंट. बेशक वहां पर जाते जाते वेलोसिटी जस्ट जीरो हो जाए. नल पॉइंट से ऑनवर्ड्स मून अपनी ग्रेविटेशनल पुल से इस ऑब्जेक्ट को खुद से अट्रैक्ट कर लेगा, राइट. सो यू हैव टू प्रोवाइड इट इनफ काइनेटिक एनर्जी so that it overcomes null point. So the change in gravitational potential energy is such that it is equal to the difference of potential energy of the starting point and null point. So let's say that from y-axis potential energy at null point is E1 and at the start this energy is E2, right. सो आप इसको E1 या EP1 लिख लें और इसको EP2 लिख लें, राइट. तो आपने इसको कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी है, यू हैव टू प्रोवाइड इट इनफ काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी विच इज EP1 माइनस EP2, राइट. नेक्स्ट स्टेप में आप काइनेटिक एनर्जी की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हाफ mv² विच इज इक्वल टू EP1 माइनस EP2. अब मैस आपको गिवन होगा ऑब्जेक्ट का, आपको वो वाली वेलोसिटी यहां से वो मिनिमम वेलोसिटी आ जाएगी विच इज रिक्वायर्ड सो दैट बॉल रीचेस नल पॉइंट, और आपका काम नल पॉइंट तक ही पहुंचाना है. आगे मून की ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट को खुद अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, राइट. एंड इन द क्वेश्चन ही इज आस्किंग यू व्हाट इज द ओवरऑल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू द सरफेस ऑफ मून. फॉर दैट यू हैव टू टेक द ओवरऑल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी right from the surface of earth to the surface of moon, ठीक है. the surface of earth पे जो potential energy है that is EP2 और the surface of moon पे जो potential energy है that is this one, जहां पर ये अपना जर्नी एंड कर रहा है, ठीक है. so let's call this point EP3. So overall change in kinetic energy during the whole journey is equal to overall change in gravitational potential energy, which is the final potential energy, minus initial potential energy, which is EP2, right. Now this is initial gravitational potential energy and this is final gravitational potential energy. There's a lot of detail, bear with it, right. So इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से कौन सी एनर्जी ग्रेटर है. इनिशियल मोर नेगेटिव है, सो दिस इज लेस, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लेस नेगेटिव है, सो इट इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड, सॉरी ग्रेटर इन इट्स वैल्यू. सो एंड टू एंड व्हाट इज हैपनिंग टू ओवरऑल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. ओवरऑल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो आप बताइए पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है. मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव हुई है,
overall potential energy is increased. ठीक है, किसके एक्सपेंस पे इंक्रीज हुई है? काइनेटिक एनर्जी के एक्सपेंस पे इंक्रीज हुई है. सो ओवरऑल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज that kinetic energy is decreased. So it will land on the surface of moon at comparatively lesser velocity, जिसको हमने पहले लिखा था. Right? We wrote here that the object will land at the surface of moon at the velocity which is less than the launching velocity, because overall kinetic energy during this whole journey is reduced. Right? So there's a lot of information in this single video, in this single scenario. You have to digest it. बच्चों, आपको इस तरह के वीडियोस को बहुत तहम्मुल से, बहुत ध्यान से और हर तरह से फ्री होके अपने सिगार्स अपने वेबसाइट पे रख के और तसल्ली से इस वीडियोस को देखना होगा. राइट? और आपको इस नॉलेज को बहुत प्रिसाइजली क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करना होगा. फिर आपसे क्वेश्चन होगा. And I hope that you will work on it. You will see the scenario. You will try to absorb as much information from this video. And you will apply that knowledge in the question. Right? Question की practice करके जाएंगे. Exam में first time question नहीं करेंगे. नहीं होगा. Right? तो practice होगी. Question foreign से होगा. Practice नहीं होगी. Exam में you will surrender. Right? I hope that you apply this knowledge very carefully. You will do a lot of practice from the past papers, and then you will be able to manage such questions. Do subscribe Slate. Wait for the next video. I'll share a lot of content with you. Stay tuned with Slate. Thank you.